Hello everyone, welcome you all at India's largest online learning platform, Unacademy. So let's start with a brief introduction about myself. My name is Ravi Yadav. I have 8 years of teaching experience in the field of GATE and English Services. Qualified GATE 5 times and also qualified State English Services Examination Uttar Pradesh and some Maharatna PSUs like NTPC, State, BHL, Coal India Limited and some other PSUs. First of all, you all need to download an Academy Learning app and get your subscription. After getting your subscription, you will get daily live classes, live tests and quizzes, structured courses and unlimited access. Right. Now, you will get live as well as recorded session. तो लाइव सेशन भी मिलेगा, आपको रिकॉर्डेड कोर्सेज भी मिलेंगे, आप दोनों में से कोई भी वॉच कर सकते हैं. लेकिन लाइव क्लासेस देखने का फायदा ये होता है, उसका बेनिफिट ये है that right, you can chat with your educator, you can ask your doubts in the class itself, right? That means that class, the live class will be full interactive class. Okay, that will be a full interactive. Okay? रिकॉर्डेड सेशन में आपके पास ये बेनिफिट नहीं होगा कि आप अपने एजुकेटर से अपने जो डाउट्स हैं उसको तुरंत पूछ सकें. Right? That is only for the live classes. Okay, now there will be live test and quizzes. आप किसी भी एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन कर रहे हो, वेदर इट इज गेट और इंजीनियरिंग सर्विसेज एग्जामिनेशन, आप अपनी प्रिपरेशन को इवैल्यूएट करने के लिए जो बेस्ट वे है, किसी भी एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन को इवैल्यूएट करने के लिए जो बेस्ट वे है, दैट इज टू पार्टिसिपेट इन द टेस्ट सीरीज, to participate in the test series or quizzes. Okay, all this. Now there are structured courses, means whether it is GATE or engineering services examination, whether it is GATE or engineering services examination, जो आपके कोर्सेज हैं अनअकैडमी के, दैट आर डिजाइन एज पर एग्जामिनेशन सिलेबस एंड एग्जामिनेशन पैटर्न. वो आपका एक फुल पैटर्न फॉलो किया जाता है, एग्जामिनेशन का पैटर्न, एग्जामिनेशन का जो भी सिलेबस, ताकि आपको मैक्सिमम बेनिफिट. You will get chance to learn with other top educators across India also. The courses at Unacademy for GATE and engineering services examination, okay, for mechanical engineering, अलग-अलग number of batches run करते हैं throughout the year for different branches. Like for mechanical engineering, there are 24 courses. Electrical engineering, there are 18 courses. Electronics and communication, there are 10 courses. Like that, something like that. एक फुल थ्रू आउट द ईयर नंबर ऑफ बैचेस रन करते हैं, जिसमें आप किसी बैच को आप ज्वाइन कर सकते हैं, उसके बेनिफिट अवेल कर सकते हैं. ओके, नाउ देयर आर two kinds of subscription that are available with Unacademy. One is the plus subscription, other is the icon. In the plus subscription, you will get India's best educator, interactive live classes, structured courses and PDFs, live test and quizzes. Okay, all these things. Now, India's best educator, you will get India's best educator, interactive live class, structured course and PDF. जो भी कोर्स आप पढ़ते हैं, उसका PDF फॉर्मेट में भी वो आपको अवेलेबल होगा. आपका जो नोट्स होगा, that will be available in the PDF format. Live test होंगे, quizzes होंगे, all those things will be there. Now, let us see. What is the benefit of iconic subscription? This one, a personal coach. You will get a personal coach. You will get a personal coach जिनके साथ आप one to one discussion कर सकते हैं regarding your doubts, regarding the strategy that you should follow for a particular examination. Okay, the strategy that you should follow for a particular examination. You will also get test analysis, personalized test analysis, study planner, preparatory study material. All those things you will get when you are taking iconic subscription. Now let us see the fee structure. For plus subscription, 24 months, the fee is 44,000. और भी courses available है 1, 3, 6, 12, 18 months. लेकिन 6 month या उससे ज़्यादा का कोर्सेज अगर आप लेते हैं तो आपको नो कॉस्ट EMI भी अवेलेबल होगी, राइट. आप उसके बेनिफिट भी ले सकते हैं. लेकिन ये जो फी आप देख रहे हैं, इसमें भी आपको 10% का डिस्काउंट मिलेगा if you are using this referral code. If you are using this referral code, if you are using this referral code, that is Ravi Sir. If you are using this referral code, you will get 10% discount in your total annual. Okay. Now, जो फी आपकी 44,000 थी, now that will become as 39,600.
That will become 90,000, oh, sorry, 39,600 rupees only. Okay. Now for the iconic subscription, now for the iconic subscription, the fee for 12 months is 50,250. 24 months, the fee is 24,000. For 12 months, this is 45,225. For 24 months, the fee is 66,600 rupees. Right, after using this referral code, Ravi PY. If you use this code Ravi PY, you will get 10% discount. Right? You will be getting 10%. So I hope you got the point and you will get your subscription as soon as possible. But आपका जो भी आपको suitable लगता है प्लस या आइकॉनिक दोनों में से कोई सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं. But you should go for iconic subscription because in iconic subscription you will get personal coach इनके साथ आप वन टू वन डिस्कस कर सकते हैं अपने एग्जामिनेशन की स्ट्रेटेजी के बारे में, अपनी प्लानिंग के बारे में. All these things you can discuss with your personal coach, and that will help you in securing better rank also. Not just not just selection. सिर्फ सिलेक्शन से काम आपका नहीं चलेगा. दैट यू ऑल अंडरस्टैंड. आपको बेटर रैंक चाहिए. यू ऑल नीड बेटर रैंक. ओके, यू ऑल नीड बेटर रैंक. फॉर दैट यू नीड पर्सनल गाइडेंस एंड दैट यू विल गेट जब आप आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन. ओके, तो let's start with the let's start with the class session now. Let's start with the session now. We are discussing thermodynamics revision through the problem. Right. We have already taken the few lectures. Just wait. We are discussing revision of thermodynamics through the problems. We are discussing what is the strategy here. We are discussing uh, concepts. We are discussing formulas. Like the formulas with assumptions, assumptions, and formula assumptions and validity of the formula also. Validity or applicability, कहाँ पे formula valid है, कहाँ पे नहीं है, all those things. And then we solve 10 to 15 problems per topic, right? Per topic to refresh, to refresh problem solving approach. Problem solving approach, right? होता क्या है कि जो सब्जेक्ट आपने बहुत पहले पढ़ लिए होते हैं 4 मंथ्स 6 मंथ्स 5 मंथ्स बैक, उन सब्जेक्ट को आपको रिवीजन के टाइम पे अगर आपने सिर्फ फॉर्मूला पढ़ लिया, कंसेप्ट पढ़ लिया, राइट, तो फॉर्मूला पढ़ लिया, कंसेप्ट पढ़ लिया, तो आपको जो प्रॉब्लम हर एक जो गेट एग्जामिनेशन फॉर गेट, दिस इज फॉर गेट 2021, दिस इज फॉर गेट 2020, दिस इज फॉर गेट 2020, फॉर गेट 2020, राइट.
दिस इज कॉल्ड 10 to 15 प्रॉब्लम पर टॉपिक रिप्लेस द राइट। ये 20 होता क्या है कि जब गेट की आप प्रिपरेशन कर रहे होते हैं तो जो आपका एग्जामिनेशन है उसका पैटर्न ऐसा है दैट इज न्यूमेरिकल राइट। एंड टू सॉल्व द न्यूमेरिकल्स यू नीड और फ्लो, आपकी जो फ्लुएंसी है उस पर्टिकुलर टॉपिक के प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए बहुत छोटी छोटी बातें होती है फॉर्मूले में, जिसको अप्लाई करके ही आप सीख पाते हैं। तो एक बार एक एक दो दो प्रॉब्लम हर टॉपिक पे, हर कंसेप्ट पे, हर फॉर्मूले पे बेस्ड अगर हमने कर लिया, अच्छी प्रॉब्लम कर लिया जो आपके एग्जामिनेशन में आने लायक है या फिर आई हुई है, ताकि आपका कंप्लीट रिवीजन हो जाए और जो प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच होती है किसी पर्टिकुलर टॉपिक के लिए राइट, वो आपके लिए रिफ्रेश हो जाए एंड दैट विल बी beneficial for okay. So we have already completed first law, basic concept, work transfer, heat transfer. Now today we are going to uh, start steady flow process, right? Steady flow energy equation. Steady flow energy equation. Steady flow energy equation right, that is SF. And steady flow भी देख लेंगे हम साथ में। Steady flow, what is the meaning of steady flow? That properties do not vary, that means property do not vary with time, that is steady flow. Properties do not vary with time, right? Vary with time, not vary with that time. Property do not vary with. Now what is steady flow energy equation? Let us write that also. What is the steady flow energy equation? Like a steady flow energy equation. Now what is S.F.E.E? Steady flow energy equation. Like that is H1 plus T1 square by 2 plus GZ1 plus Q. Q dot means flow rate, heat flow rate, and that is H2. Enthalpy, of course, is specific enthalpy. T2 square by 2 plus GZ2 plus work. Right. That is work transfer. This is steady flow energy equation. This is also called. This is also known as first law of thermodynamics. This is also known as first law of thermodynamics. This is also known as first law of thermodynamics. First law of thermodynamics. It's also known as first law of thermodynamics. Also known as first law of thermodynamics for open system, right? Closed system के लिए हमने first law of thermodynamics देख लिया था. This is for open. First law of thermodynamics for open system, right? Now there are some special cases also. This is the main equation. जब भी आपको steady flow given होगा, right? Condition सिर्फ ये है कि the flow should be steady. Properties do not should not vary with time. Then only you can say that this process is steady flow process. The first law of thermodynamics for open system. This is first law of thermodynamics for open system. Now let us see some special cases. We have also some special cases. ये हमने क्लास में डिस्कस किया है, आज हम सिर्फ उसका रिवीजन कर रहे हैं, क्विक रिवीजन। राइट, द फर्स्ट वन इज नोजल। अगर नोजल गिवन है एंड द फ्लो थ्रू नोजल इज, अगर आपसे नोजल कहा गया है और ये कहा गया है द फ्लो थ्रू नोजल इज स्टेडी फ्लो, तो आप स्टेडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन तो कहीं पे भी यूज कर सकते हैं, दैट इज वैलिड। स्टेडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन यू कैन यूज एनीवेयर, बट अगर आपसे कहा गया है फ्लो स्टेडी होना चाहिए, नोजल के लिए जो कंडीशन हम यूज करते हैं, नोजल मीन्स टू इंक्रीज द वेलोसिटी, दिस इज समथिंग लाइक दैट। ये भी स्टेडी फ्लो प्रोसेस है, आपने कहीं पे भी ले लिया, दो पॉइंट्स
ये जो क्वांटिटीज हैं, आई होप यू रिमेंबर दैट दिस इज पॉइंट वन, दिस इज पॉइंट टू, दिस इज वन, दिस इज टू, दिस इज इन, दिस इज exit, like inlet and outlet या inlet and exit. और दिस इज अगर नोजल है, ये आपको वन है, एच वन, यहाँ पे जो प्रॉपर्टी होगी एच वन सी वन जेड वन एंड टू, हीट ट्रांसफर इसमें कंट्रोल वॉल्यूम के थ्रू. व्हाट इज नोजल? अगर आपने नोजल लिया है तो दैट इज एच वन इक्वल्स टू एच टू प्लस सी टू स्क्वायर बाई टू. When C1 is much less than C1 is negligible as compared to C2. अदरवाइज अगर नहीं है, ये फॉर्मूला अप्लीकेबल होने के लिए कंडीशन ये है कि जो आपकी नोजल है दैट शुड बी इंसुलेटेड, राइट. नोजल में कोई वर्क ट्रांसफर नहीं होता, हीट ट्रांसफर इज जीरो, नोजल के थ्रू कोई वर्क ट्रांसफर नहीं होता, एंड Z1 इक्वल्स टू Z2, राइट. तो ये फॉर्मूला आपका बन गया. एक फॉर्मूला ये लिख लेंगे, और दूसरा या तो आप ऐसे लिख लेंगे एच वन प्लस C1 स्क्वायर बाई टू प्लस सॉरी इक्वल्स टू एच टू प्लस C2 स्क्वायर बाई. ओके. अगर C1 C2 आपका नेग्लिजिबल नहीं है, प्रॉब्लम में C1 C2 दोनों गिवन है, इनलेट वेलोसिटी गिवन है, आउटलेट वेलोसिटी गिवन है, तो आप इसको सेकेंड वाला फॉर्मूला यूज कर लेंगे. अगर आपसे कहा गया है दैट C1 इज नेग्लिजिबल एज कंपेयर टू C2, तो जो उसका स्क्वायर कर लेंगे दैट विल आल्सो बी नेग्लिजिबल. There is special cases. The second special case is turbine. Second special case is turbine. Let us discuss the turbine. What is turbine? Second special case is turbine. We all know turbine. जो फॉर्मूला हमने लिखा था, दिस फॉर्मूला, ये जो फॉर्मूला है, दिस इज वैलिड फॉर एनी स्टीडी फ्लो, राइट. दिस इज द मोस्ट जनरल फॉर्म. उसी में हमने कुछ केसेस ऐड किए हैं. कौन सा केस है? जो टर्बाइन है वो इंसुलेटेड होने से कोई हीट ट्रांसफर, जो नोजल है, नोजल से कोई वर्क ट्रांसफर नहीं होता, ये हमेशा ही है, एंड Z1 इक्वल्स टू Z2. अब अगर नोजल आपसे कह दिया गया कि नोजल इंसुलेटेड नहीं है, तो वहां पे हीट ट्रांसफर गिवन होगा. आप ये फॉर्मूला यूज करेंगे जो मोस्ट जनरल इक्वेशन है, राइट. जो आपकी मोस्ट जनरल इक्वेशन है आप उसको यूज करेंगे. दिस इज आवर जनरल इक्वेशन. जो जनरल इक्वेशन है आप उसको यूज करेंगे, उसमें हीट ट्रांसफर भी लेंगे, उसमें वेलोसिटीज भी लेंगे, सब कुछ लेंगे. लेकिन अगर आपसे कह दिया गया कि नोजल इज इंसुलेटेड, दैट मींस हीट ट्रांसफर इज जी. ये जो फॉर्मूला आपने लिखा है, फॉर्मूला 1 एंड 2, उसमें ये सारे एजम्पशंस आपने किए. ओके. अगर ये सारे एजम्पशंस प्रॉब्लम में नहीं गिवन है, Z1 Z2 भी गिवन है, आपका वर्क ट्रांसफर तो नोजल थ्रू नहीं होता है, लेकिन अगर कहा गया है कि नोजल इंसुलेटेड नहीं है, देयर इज अ हीट ट्रांसफर टू द नोजल और फ्रॉम द नोजल. ओके. तो आप हीट ट्रांसफर भी, ऑलराइट. नाउ हियर, यहाँ पे भी हमारे पास एक जनरल फॉर्मूला तो है. यहाँ पे भी अगर ये टरबाइन है और इस टरबाइन से हमें टरबाइन वर्क मिल रहा है और इसको हमने इंसुलेटेड कर दिया, दिस टरबाइन इज इंसुलेटेड, राइट. दिस टरबाइन इज इंसुलेटेड. ओके. नाउ व्हाट इज टरबाइन वर्क? टरबाइन वर्क इज H1 minus H2. The turbine work is H1 minus turbine work is H1 minus turbine work is H1 minus turbine work H1 minus. बट ये वो टरबाइन वर्क है जो हम पावर प्लांट पढ़ते हैं या फिर राइट आईसी इंजन पढ़ते हैं. वहां पे जो भी टरबाइन हम यूज करते हैं, जो टरबाइन गैस टरबाइन हो सकती है, स्टीम टरबाइन हो सकती है, जो आपको टरबाइन का फॉर्मूला पढ़ते हैं आप वहां पे ये फॉर्मूला यूज करते हैं. ओके. जो टरबाइन पढ़ते हैं पावर प्लांट इंजीनियरिंग में, हम टरबाइन पढ़ते हैं, टरबाइन को वर्क लिखने के लिए हम डायरेक्ट H1 माइनस H2 लिख लेंगे, राइट. वो फॉर्मूला यहाँ से आता है. एंड व्हाट इज द एजम्पशन बिहाइंड दिस फॉर्मूला? व्हाट इज द एजम्पशन बिहाइंड दिस फॉर्मूला? एजम्पशन, राइट. द टरबाइन इज, एक तो पहले ये है दैट इज स्टेडी फ्लो,
The flow should be steady, right? Kinetic and potential energy changes are negligible. Changes are negligible, and uh, third one is जो आपका टरबाइन है, टरबाइन इज इंसुलेटेड. ये चीज आपको ध्यान रखना है. अगर किसी प्रॉब्लम में टरबाइन तो मेंशन है, लेकिन ये नहीं कहा गया है कि टरबाइन इज इंसुलेटेड या फिर काइनेटिक पोटेंशियल चेंजेस और नेग्लिजिबल, राइट. तो आप ये जनरल जो फॉर्मूला है, ये जनरल फॉर्मूला यूज करेंगे. उसमें वेलोसिटी भी रखेंगे, काइनेटिक को नेग्लेक्ट नहीं करना है. Z1 Z2 की वैल्यू गिवन है, उसको भी रखेंगे आप, राइट. अगर टरबाइन इंसुलेटेड नहीं है तो हीट ट्रांसफर भी गिवन होगा, उसको भी यूज करेंगे. यू विल यूज द जनरल फार्मूला. इसी जनरल फार्मूले से हम यहाँ तक आए थे, टरबाइन वर्क H1 माइनस H2 तक. लेकिन उस केस में क्या था कि हमने ये एजम्पशन ले लिया, स्टेडी फ्लो है, काइनेटिक पोटेंशियल एनर्जी चेंजेस को नेग्लिजिबल कर लिया है, टरबाइन इंसुलेटेड. ओके. थर्ड वन इज कंप्रेशन. थर्ड वन इज कंप्रेशन, राइट. कंप्रेशन में here this is again 1 and this is, now what is the compressor work? Compressor work is negative and that will be H2 minus H1. ये है हमारा कंप्रेसर वर्क. और ये कंप्रेसर वर्क जो हम पावर प्लांट पढ़ते हैं, आईसी इंजन पढ़ते हैं, राइट, आरएसी पढ़ते हैं, वहां पे जो कंप्रेसर यूज करते हैं वहां पे हम डायरेक्टली लिखते हैं दैट इज H2 माइनस H1. इसके साथ भी एजम्पशंस सेम है जो हमने टरबाइन के साथ. हमने यहाँ पे टरबाइन लिखा था, इसको हम स्लैश कर देंगे, दैट इज कंप्रेशन. स्टेडी फ्लो है, काइनेटिक पोटेंशियल चेंज नेग्लिजिबल है. टरबाइन ये जो कंप्रेसर है, दैट आर इंसुलेटेड, परफेक्टली इंसुलेटेड, मींस देयर इज नो हीट ट्रांसफर, राइट. हियर हीट ट्रांसफर इज 0, Z1 इक्वल्स टू Z2, C1 इक्वल्स टू, ये सारे एजम्पशंस आपने दोनों केस में, Q इक्वल्स टू 0, Z1 इक्वल्स टू Z2, C1 इक्वल्स टू. ऑलराइट. अब अगर किसी प्रॉब्लम में, किसी पर्टिकुलर प्रॉब्लम में आपसे ये कह दिया गया है कि जो Z1 Z2 है वो सेम नहीं है, Z1 Z2 के अलग अलग वैल्यूज गिवन है. C1 C2 का, C1 C2 इज वेलोसिटी, राइट. हमने C1 C2 यूज किया है क्योंकि इस टॉपिक में हम E यूज करते हैं फॉर वॉल्यूम, तो मैंने आपको यहाँ पे C1 C2 यूज कर लिया है, राइट. दैट इज वेलोसिटी. आई होप यू रिमेंबर द notation, right, at least. C1 C2 are velocity, Z1 Z2 are potential head, Q is heat transfer, W is work transfer, H1 H2 is enthalpy. तो ये जो एजम्पशन है, अगर किसी प्रॉब्लम में कहा गया कि कंप्रेसर में हीट ट्रांसफर हो रहा है, यू हैव टू टेक एंड देन यू विल हैव टू यूज दिस जनरल फार्मूला. जनरल फार्मूला है उसको आपको यूज करना पड़ेगा, राइट. और अगर ये सारे एजम्पशन उस जनरल फार्मूले में रखिए तो आप यहाँ तक. ओके, सो आई होप यू गॉट द पॉइंट कि हमने कैसे यूज किया है कि हमने इसको कैसे यूज किया. तो one more thing is throttling process. What is throttling? What is throttling process? Throttling process में आप देखते हैं, that is what is characteristics of throttling process. Right, characteristics of throttling process. Characteristic is no heat transfer, no heat transfer, right, no work transfer. This characteristic you should always remember. No heat transfer, क्योंकि बहुत सारे न्यूमेरिकल्स ऐसे बनते हैं जहाँ पे थ्रॉटलिंग प्रोसेस मेंशन होगा. ये सारी कैरेक्टरिस्टिक्स आपको समझ में आ जानी चाहिए, आपको पता होनी चाहिए, दैट यू विल यूज दैट डायरेक्टली. नो वर्क ट्रांसफर, irreversible process, right. This is irreversible process and this is also isenthalpic process. Isenthalpic. थ्रॉटलिंग की कैरेक्टरिस्टिक्स है जो हमने डिस्कस की थी क्लास में, दैट यू कैन वॉच द लेक्चर एंड यू विल फाइंड थ्रॉटलिंग प्रोसेस में सारी कैरेक्टरिस्टिक्स कैसे. वी आर जस्ट क्विकली रिवाइजिंग दिस. ये भी आपका ये जो आइसेंथैल्पिक है,
ये जो आइसेंथैल्पिक कंडीशन भी आपकी स्टेडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन से आती है। अगर आपने ये सारी कंडीशन रख ली, लोड ट्रांसफर, नो वर्क ट्रांसफर और ये सारी चीजें आपने रख लिया, यू विल फाइंड दैट दिस इज आइसेंथैल्पिक प्रोसेस। Okay, you will find that this is isenthalpic process and that is isenthalpic means its enthalpy will be constant, almost equal, 1 equals to almost. The isenthalpic process, that is no heat transfer, no work transfer, irreversible process and isenthalpic. So this is X. Now one more thing is let us see unsteady state also. Let us also discuss unsteady state. Let us also discuss unsteady state. तो भी साथ में ही कर लेते हैं रिवाइज अनस्टेडी स्टेट। एक चीज जो रह गई है इस फॉर्मूले में, लेट अस दैट आल्सो। ये जो फॉर्मूला हम पढ़ते हैं, दिस फॉर्मूला जो SFE है, स्टेडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन, राइट। इन दिस फॉर्मूला लेट अस डिस्कस इन दिस फॉर्मूला H1 plus C1 square by 2 plus GZ1 plus Q and that equals to H2 plus C2 square by 2 plus GZ2 plus ये जो फॉर्मूला है, okay, in this formula that is work, in this formula जो आपका यूनिट है, right, जो यूनिट है, यूनिट फॉर C1 square by 2 and that is meter square per second square, और जो GZ1 है, Z1 is meter, that is meter per second square and इसकी भी जो यूनिट है that is meter per second square, like meter square per second. Now what is meter square per second square? Let us see what is joule per kg. What is joule? Joule is Newton meter per. What is Newton? What is Newton? That is mass into force, mass into acceleration, kg into acceleration, m, like mass. Newton is force, force is mass into acceleration, kg, acceleration into mass per meter per second square into meter and divided by that will cancel out and that is meter square per. तो जो मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर है, ये जो मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर है, दैट कॉरेस्पॉन्ड्स टू जूल पर। लेकिन एक्चुअल में प्रॉब्लम में होता क्या है, राइट, इन प्रॉब्लम्स जनरली या फिर मोस्ट ऑफ द टाइम जो H है दैट इज गिवन एज किलो जूल पर केजी, जो Q है दैट इज ऑल्सो गिवन इन किलो जूल पर केजी, जो वर्क ट्रांसफर है दैट इज ऑल्सो गिवन एज किलो जूल पर केजी। तो बाकी जो टर्म्स बच गए उसको भी आपको किलो जूल पर केजी में कन्वर्ट करना पड़ेगा, बट वो है किसमें अभी फिलहाल जूल पर केजी। तो जो हम प्रॉब्लम इस पे जो फॉर्मूला यूज करते हैं उसको हम ऐसे करते हैं, H1 प्लस C1 स्क्वायर बाई 2000 प्लस GZ1 बाई 1000 प्लस Q H2 प्लस C2 स्क्वायर बाई 2000 प्लस GZ1 बाई 1000 प्लस, ये आप ध्यान रखेंगे, दिस इज इम्पोर्टेंट। क्योंकि जनरली होता क्या है कि जो बाकी की यूनिट है दैट इज किलो जूल पर केजी, लेकिन जो वेलोसिटी है उसको कन्वर्ट करेंगे आप मीटर से टू मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर को कन्वर्ट करेंगे आप जूल में, तो दैट विल बी जूल पर केजी। बाकी की किलो जूल में है तो यूनिट सबकी सेम होनी चाहिए, तो आप कन्वर्ट कर लेंगे या तो बाकियों को जूल पर केजी में या फिर जो आपकी वेलोसिटीज है उसको जूल पर केजी में। ओके, किलो जूल पर केजी में जो वेलोसिटी है, जो आपका GZ1 है, पोटेंशियल है एंड काइनेटिक, उसको आप कन्वर्ट कर लेंगे इन किलो जूल पर केजी। ओके, so I hope you got the point. I hope you got the point. Let us see. एक छोटा सा पॉइंट हम ले लेते हैं, तो प्रॉब्लम्स करेंगे आपको क्लियर हो जाएगा मैं क्या कहना चाह रहा था। आई होप यू गॉट दिस पॉइंट। क्यों हमने 1000 से डिवाइड कर दिया सिर्फ दो टर्म को,
kinetic head and potential head. बाकी heat transfer Q dot is heat transfer, that will be given in kilojoule. अनस्टेडी स्टेट भी देख लेते हैं और जल्दी से, दैट इज अनस्टेडी, या फिर इसको हम कहते हैं चार्जिंग एंड डिस्चार्जिंग ऑफ, चार्जिंग एंड डिस्चार्जिंग ऑफ, चार्जिंग एंड डिस्चार्जिंग ऑफ, okay, unsteady flow, charging discharging of tank, that is unsteady, that is example of unsteady flow. तो जब भी आपको unsteady flow का प्रॉब्लम सॉल्व करना होता है, राइट, whenever you have to solve problems on unsteady flow, आप simply go for something like mass conservation. हम दो चीजें अप्लाई करते हैं वहां पर, अप्लाई टू थिंग्स, वन इज मास कंजर्वेशन, मास कंजर्वेशन, दो फॉर्मूला यूज करते हैं, वन इज द मास कंजर्वेशन, मास कंजर्वेशन। अब सपोज कि हमारे पास कोई कंट्रोल वॉल्यूम है, एक कंट्रोल वॉल्यूम है, यहाँ पे है दैट इज मास फ्लो रेट एट इनलेट एंड हियर मास फ्लो रेट एट एग्जिट, और इसमें जो इनिशियल मास है m1, और राइट m1 इज इनिशियल मास एंड m2 इज फाइनल मास, राइट। जो कंट्रोल वॉल्यूम है, दिस इज आवर कंट्रोल वॉल्यूम, कंट्रोल वॉल्यूम, दिस इज आवर कंट्रोल। इस कंट्रोल वॉल्यूम के लिए मास कंजर्वेशन लगाएंगे dm by dt, कंट्रोल वॉल्यूम, एंड दैट विल बी मास फ्लो रेट इनलेट माइनस मास फ्लो रेट एट एग्जिट। तो जिस रेट से मास फ्लो रेट इन हो रहा है, सपोज मास फ्लो रेट इनलेट 5 kg पर सेकेंड, एग्जिट है 3 kg पर सेकेंड, दैट मीन्स 2 kg पर सेकेंड इज इंक्रीजिंग, उस कंट्रोल वॉल्यूम में इतना मास पर यूनिट टाइम इंक्रीज कर रहा है। सेकेंड वन विल बी कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, conservation of, second one will be the conservation, right? What is conservation of energy? dE by control volume, energy flow rate at inlet minus energy flow rate at exit, okay? इस एनर्जी में हमने अभी देखा था फर्स्ट और थर्ड वन इसमें कि ओपन सिस्टम के लिए कौन कौन सी एनर्जी होती है, ठीक, एंड वी फाइनली अराइव टू दिस फॉर्मूला du by dt in control volume is mi hi plus q dot mihi plus q dot minus me he plus, okay. This is our control volume. Okay. एक तो ये देख लिया आपने, ये क्वेश्चन हमें यूज करना है। एक आपसे एक अगर सपोज ये हमारी सप्लाई लाइन है, दिस इज आवर सप्लाई, दिस इज आवर सप्लाई लाइन, this is our supply, this is our supply line and this is our tank, okay? This is our tank और ये टैंक हमारा इंसुलेट, दिस टैंक इज, ये वॉल्व लगा दिया आपने, okay? और ये है हमारा कंट्रोल। कंडीशन ये है कि यहाँ पे जो एच आई एंथैल्पी, इंटरनल एनर्जी यू आई, प्रेशर इज पी आई, राइट। होता क्या है कि एक इंसुलेटेड टैंक है आपके पास, देयर इज इंसुलेटेड टैंक इनिशियली इवैक्यूएटेड, दिस इज इवैक्यूएटेड इनिशियली इवैक्यूएटेड, राइट, is connected to a supply line like carrying a fluid at specific internal energy of ui, specific enthalpy, प्रेशर आपको गिवन है, सब कुछ गिवन है। इस बॉल को आपने ओपन कर दिया, द फ्लूइड फ्लोज इन द
टैंक, इसको टैंक में फ्लूइड आपका फ्लो करता है, राइट। तो यहाँ पे इस कंडीशन में, राइट, so that final specific internal energy, that is U2, इस टैंक में is equal to H, UT equals to HI, ये आपको याद रखना चाहिए। एंड U2 equals to that means T2 equals to gamma T। कंडीशन यहाँ पे ये है कि यहाँ पे कोई मास एग्जिट नहीं है, मास एग्जिट इज जीरो, और m1 is zero. There is no initial mass in इस टैंक से कुछ भी एग्जिट नहीं हो रहा है, इनिशियल मास उसमें जीरो है। जब वाल्व आप ओपन कर देंगे, जब ये पूरा सिस्टम इक्विलिब्रियम में आएगा, तो जो फाइनल इंटरनल एनर्जी होगी इन द टैंक, दैट विल बी इक्वल टू इनिशियल, जो आपका सप्लाई लाइन में जो स्पेसिफिक एंथैल्पी है उसके बराबर। इस टैंक में जो फाइनल टेम्परेचर होगा, दैट विल बी जो आपका सप्लाई लाइन है उसका जो, तो दिस इज इंपॉर्टेंट, इसको कई बार पूछा जा चुका है, इसका डेरिवेशन भी पूछा जा चुका है, डेरिवेशन हमने क्लास में डिस्कस किया हुआ है, राइट। तो दिस इज ऑल फॉर स्टेडी एंड अनस्टेडी फ्लो। बाकी हम देखते हैं, दो क्वेश्चन करेंगे, उसके बाद वी विल सी। नाउ हियर इज द फर्स्ट प्रॉब्लम, हियर इज द फर्स्ट प्रॉब्लम दैट यू शुड read this question and try to, okay, this is the question, you have 1 minute to solve this। I just gave you the quick reason, the formula, क्या क्या formula था, क्या क्या concept, right? Then you should solve this। Right? By seeing this problem, you can see that this is the problem of unsteady, unsteady, right? चार्जिंग डिस्चार्जिंग टैंक है, टैंक आपके यहाँ पे डिस्चार्जिंग है, टैंक से बाहर जा रहे हैं, कुछ एक स्टील टैंक है, placed in a hot environment contains 5 kg of air at 4 atmosphere pressure at 30 degrees Celsius. A portion of the air is released till the pressure becomes 2 atmosphere, right? 2 atmosphere. Later, the temperature of the air in the tank is found to be 150 degrees Celsius. The quantity of air allowed to escape, तो कितनी एयर उसमें से बाहर चलेगी, asked in this that has been asked in this, okay। So I hope you can solve this question real quick। So let us try to solve, okay। Let me solve this।
क्या कहा गया आपसे कि स्टील टैंक है, दिस इज अ स्टील टैंक, दिस इज स्टील टैंक। इसमें जो प्रेशर है दैट इज 4 एटमॉस्फेरिक प्रेशर एंड 5 kg, air is 5 kg in this case and 30 degree Celsius temperature. Right, this is initial case. Finally, इस टैंक में जो प्रेशर हो जाता है दैट इज 2 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, प्रेशर इज 2 एटमॉस्फेरिक प्रेशर एंड टेम्परेचर इज 150 डिग्री सेल्सियस, 150 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर। ओके, तो यहाँ पे मास कितना होगा ये आपसे, क्वांटिटी ऑफ एयर इज अलाउड टू एस्केप, तो यहाँ पे कितना मास बच गया और कितना मास यहाँ से बाहर चला गया, दैट हैज बीन आस्क्ड। तो कंजर्वेशन ऑफ मास अप्लाई कर लेंगे सिंपल, तो जो मास इनलेट है माइनस मास एग्जिट, राइट, दैट इज m2 माइनस एग्जिट मास इनलेट कुछ नहीं है, मास इनलेट इज 0, यहाँ पे कोई इनलेट मास नहीं, नो इनलेट, सिंपल मास कंजर्वेशन है और कुछ नहीं, मास अगर कुछ नहीं है तो कितना मास एग्जिट हो गया, सिंपल जो मास बच गया माइनस, राइट। अब ये माइनस आएगा, इसको भी माइनस करें क्योंकि m1 हमारा ज़्यादा है m2, इनिशियल मास जाहिर सी बात है ज़्यादा है, फाइनल मास हमें m1 माइनस, ये भी माइनस है, फाइनली हम इसको या फिर लेट अस राइट दिस माइनस m, दैट इज m e इक्वल्स टू m डॉट e इक्वल्स टू m1 माइनस, राइट, m1 माइनस, ये हमें फाइंड करना है कि हमारा मास यहाँ पे कितना है, दैट इज m, m डॉट, उसके लिए हमें फाइंड करना पड़ेगा पहले हमारे पास मास कितना था, तो इनिशियल मास m1 is 5 kg, this is given, m1 is 5 kg, what is m2, okay, m2 is p2 p by r, p2 simple, pv equals to mr2, simple pv equals to m r, यहाँ से p आप ले लिया, what is v, v आप ऐसे भी लिख सकते हैं, that is p2 by rt2, and what is v, v is m1 r1 p1, r1 is r by p, mrt by, right, p1 is m1 r1 m1 rt1 by p, r is cancelled out, what is p2, p2 is 4 atmosphere pressure, m1 is 5, r is cancelled, और T1 initial temperature is 303 30 degree Celsius, 30 degree Celsius को हमने केल्विन में कन्वर्ट कर लिया 303, finally what is the temperature, 150 degree Celsius, later the temperature is 150 degree Celsius, 150 plus 373, 273, that is 423 something, 423, what is P1, P1 is 2, okay, P1 is 2, P2 is 2, P1 is 4, P2 is 2, P1 is 4. Right, we will solve this and we will find what is M2. Let us solve this and find what is M2. M2 is 2 into 5 into 303. That is 1.79. That is 1.79. ये मास है जो उसका टैंक में बच गया, M1 जो आपका इनिशियल मास इतना था, तो कितना एग्जिट हो गया, that is M1 minus, right, M1 minus M2, that is 5 minus 1.79, that is 3 point, exit जो मास हो गया that is m point 3.21 kg, that is option is D. For the first option is D. Simple mass conservation आपको अप्लाई करना था और कुछ नहीं, simply you have to apply mass conservation, ये आपको फाइनल स्टेटमेंट था, simply we have applied mass conservation, simply we have applied mass conservation and nothing else, mass conservation just mass, okay, so I hope you got the
Okay, the answer is 3.21 kg. Answer is 3.2. Next one. Okay, you have 1 minute for this question. This is pure theoretical question. Yes, you have 1 minute. Which of the following statements are correct for the throttling process? It is an adiabatic steady flow. What is the condition for throttling process? No heat transfer, no work transfer, isenthalpic process, and irreversible. That means it is an steady flow process, yes. Enthalpy before and after throttling or same, of course, that is isenthalpic process. In the process, due to fall in the pressure, the fluid velocity at outlet is always more than inlet velocity. That is not true. That means only option 1 and 2 is correct. हमने throttling characteristic पढ़ी थी. Yeah. No heat transfer, no work transfer, irreversible process and isenthalpic. C1 C2 जो velocities है that is almost option is 1. The option is 1. Moving towards the okay, this is a little bit lengthy question, so I'll give you right more than 1 minute to read this question. Okay, you have to answer this quickly. You have to answer this real. Okay. ये वो सेम क्वेश्चन है जो हमने अभी डिस्कस किया था. दैट्स व्हाई आई सेड दिस इज इंपॉर्टेंट. ऑब्जेक्टिव प्रॉब्लम्स में भी इसका सब्जेक्टिव जो इंजीनियरिंग सर्विसेज है सब्जेक्टिव एग्जामिनेशन में भी इसका जो डेरिवेशन है दैट डेरिवेशन हैज बीन आस्क्ड. Okay, this cylinder is initially empty.
दिस इज सप्लाई मेन, सप्लाई लाइन या सप्लाई मेन। इसमें जो स्पेसिफिक एंथैल्पी एच आई, इंटरनल एनर्जी यू आई, प्रेशर एंड टेम्परेचर टेम्परेचर, बाकी कंडीशन सेम है, राइट। और ये सारी कंडीशन सेम होगी, ये जो आपका इवैक्यूएटेड है दैट इज एम्प्टी और नथिंग इज गोइंग आउट ऑफ दैट सिलेंडर टैंक, राइट। दिस इज अ टैंक, नथिंग इज गोइंग आउट ऑफ दिस टैंक और सिलेंडर। तो यहाँ पे भी सारी कंडीशन सेम है, ठीक। दैट मीन्स ये स्पेसिफिक एंथैल्पी है H2 is HI. Specific enthalpy of gas in supply main is equal to specific internal energy of the gas in the cylinder. Finally, initial तो कुछ भी नहीं था उसमें. Finally, that will be due to HI equals to 2. Okay. इसका डेरिवेशन सिंपल है, डेरिवेशन के लिए आपको कुछ नहीं करना है, जो आपका दो कंडीशन मैंने बताई थी, एक आपका कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, एक कंजर्वेशन ऑफ मास, वही दोनों कंडीशन आपको यूज करना है एंड यू विल फाइंड द आंसर, यू विल फाइंड द, ठीक। लेट्स मूव टू द statement 1. Steady flow means that the rate of flow of mass and energy to the control volume are constant. That's yes. At the steady state, that is why, because at steady state, the state of the system, any thermodynamic property will have fixed value at a particular location and will not alter the. Okay. Let me tell you the change between steady and uniform. What is steady and uniform? Suppose we have taken two locations, location 1 and location. अब suppose कोई property है u, internal energy, if u here it is u2, right? If u1 equals to u2, right, that means the property is uniform, not changing with the space, not changing with the position, right? After some time at t equals to 0, right, this is u1 equals to u2, that means the property is not changing with respect to पोजीशन, u1 पे भी प्रॉपर्टी सेम है, u2 में प्रॉपर्टी, पॉइंट 2 पे भी पॉइंट 1 प्रॉपर्टी सेम है, दैट इज इट इज यूनिफॉर्म। अब एट t इक्वल्स टू 1 सेकंड आफ्टर सम टाइम सपोज यहाँ पे प्रॉपर्टी u2 हो जाती है, यहाँ पे प्रॉपर्टी अभी भी u1 है और यहाँ पे प्रॉपर्टी अभी भी u2, राइट। तो दिस इज कॉल्ड स्टीडी। जो स्टीडी फ्लो है उसमें आपकी जो प्रॉपर्टी है टाइम के साथ एक पर्टिकुलर लोकेशन पे टाइम के साथ वेरी, दिस इज स्टीडी। लेकिन राइट, दिस प्रोसेस इज स्टडी, लेकिन एक पे u1 है और दूसरे पे u2 है, एक पे u1 है दूसरे पे u2 और u1 u2 सेम नहीं है, दैट इज दिस इज नॉन यूनिफॉर्म। यूनिफॉर्म का मतलब क्या होता है कि हर जगह यहाँ पे भी u होगा और यहाँ पे भी, राइट। आफ्टर सम टाइम इट कैन चेंज, हियर u1 हियर u1, आफ्टर सम टाइम हियर u2 हियर u2, राइट। लेकिन पोजीशन के साथ अगर उसका वेरिएशन नहीं है तो दैट इज कॉल्ड यूनिफॉर्म, और अगर टाइम के साथ वेरिएशन नहीं है एट दिस लोकेशन, दिस इज कॉल्ड, ओके। स्टेडी एंड यूनिफॉर्म का ये आपने डिफरेंस देखिए। नाउ एट स्टेडी स्टेट दिस इज ए, both statements are correct and statement 2 is the correct explanation of statement. Next one. Okay, simple question है, you have to answer this. This is a simple question, you just have to answer this.
For steady flow through an insulated horizontal constant diameter pipe. The diameter is constant. Constant diameter pipe, that means here also it is. The diameter is. अगर हमने यहाँ पे steady flow energy equation यूज किया, if you are using steady flow energy equation in this case, what will be that? 1 plus g1 square by 2 plus cz1 equals to h2 plus c2 square by 2 plus gz2 plus, that is the work, right? आपसे कहा गया है area or diameter same है, that means area is same, this is 1, this is 2, and this is also insulated. This is section 1, this is section, right? d1 d2 same है, since d1 equals to d2. आपसे कहा गया heat transfer is 0, insulated, okay. अगर a1 a2 सेम है तो that means c1 equals to c2. From continuity equation c1 will be equals to c2. velocities होंगे वो भी सेम होंगे, अगर area of flow सेम है तो velocity आपकी सेम होगी. सिंपल continuity equation from the simple continuity equation. And सिर्फ इससे फ्लो हो रहा है, कोई वर्क डन नहीं होगा, देयर विल नॉट बी एनी वर्क डन, राइट. सिंपल आपका फ्लो है कांस्टेंट डायमीटर पाइप से, वर्क डन भी जीरो होगा. एंड हॉरिजॉन्टल पाइप है, दैट मींस z1 इक्वल्स टू z2. हॉरिजॉन्टल पाइप, दिस पाइप इज हॉरिजॉन्टल. वर्क तब होता है या तो एक्सपेंशन हो रहा होता है या तो कंप्रेशन हो रहा होता है, तब आपको या तो वर्क, कंप्रेशन में वर्क आपको सप्लाई करना पड़ता है, एक्सपेंशन में वर्क आपको मिल रहा है. यहाँ पे ना एक्सपेंशन है ना कंप्रेशन है, सिंपल आपका फ्लो है, दैट मींस वर्क ट्रांसफर हियर इज and z1 equals to z2 because horizontal pipe is zero. तो सब कुछ सेम है, दैट मींस h1 is equal to, here h1 is equal to h2, that means right, that means enthalpy is, that means h1 equals to h2, that means enthalpy. सिंपली आपको स्टेडी फ्लो गिवन था, आप स्टेडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन यूज कर लेंगे, बाकी सारी कंडीशंस गिवन है उससे आप सॉल्व कर लेंगे, एंड यू विल फाइंड दैट enthalpy in this case will be, enthalpy in this case will be. Next one. You have this problem, you solve it. You have one, let's give you 2 minutes, 2 minutes to solve this problem.
Just quickly tell me the answer. What is the answer for this? The mass flow rate given here. The mass flow rate is zero point 0.7 kg per second. Zero point 0.7 kg per second. Specific enthalpy entered, right? That is H1 is 290 kilojoule, and this is kilojoule, right? But if it is a specific enthalpy, this should be kilojoule per. Okay. And this should also be kilojoule per kg. The specific enthalpy here, this should be kilojoule per kg. This is 450. You should take care of the units kilojoule per kg. Velocities at the inlet and exit are 6 meter per second. C1 is 6 meter per second and C2 is 2. Assuming adiabatic process, that is heat transfer is 0. What is the power input? Or what is the power? Power is mass flow rate into what? Power is mass flow rate into what? And simply power is mass flow rate into mass flow rate into what? Mass flow rate is given, we have to find work, and what will be the work here. Okay. Let us apply, let us apply, applying steady flow energy equation. Steady flow energy equation. Applying steady flow energy equation, that is H1 plus C1 square by 2 at plus GZ1 plus Q, and that is equals to H2 plus Q square by 2 plus GZ1 तो GZ2. I have told you कि जब भी आपको ये लिखना हो न्यूमेरिकल में, क्योंकि बाकी सब कुछ किलो जूल में है, इसको भी किलो जूल में कन्वर्ट करना पड़ेगा आपको. 2000 divided by 1. Okay, and what is given? Uh, enters a nozzle helix. Nozzle helix. So Z1 equals to Z2 enters a nozzle. Enters nozzle with, and C1 C2 Z1 equals to Z2. Heat transfer is 0. Work transfer is 0. Sorry, not work transfer. Not nozzle. I don't know what is this. That's all. I guess this is turbine or something. Uh, Compressor, right? This is a compressor. Here it is given. This is compressor. That what is the work transfer of the compressor? This is we have to. This is work transfer. Here that will be H1 minus H2 plus C1 square by 2 minus C1 square minus C2 square by 2000. C1 square minus C2 square by 2000. That is this. And what is work transfer? Now everything here is given. H1 is 290 minus 450. 290 minus 450 plus C1 6 square minus 2 square 5000, and that is minus 159.98 is the, and check the calculation, 159.984, and this is kilojoule per. So what is power? Power transfer is m dot kilojoule per kg multiplied by kg per second, that is kilojoule per second, and that will be power into 150. This is minus shows that work is done on the system. Compressor work है negative ही होगा, work done on the system 159.98, and that is 112. Right. This is 112. This is all. You can check the calculation.
यही चीज मैं आपको बता रहा था कि यहाँ पे एक कंप्रेसर था, पावर इनपुट टू द कंप्रेसर, और हमने अभी कंप्रेसर के लिए क्या पढ़ा था फॉर्मूला, फॉर कंप्रेसर H2 माइनस H1, राइट। तो आप हर बार ब्लाइंडली ये फॉर्मूला यूज नहीं कर सकते, राइट। यू कैन नॉट ऑलवेज यूज दिस फॉर्मूला H2 माइनस H1 फॉर कंप्रेसर पर, राइट। क्यों? क्योंकि मैंने आपसे बताया कि ये एजम्पशंस है, ये सारे एजम्पशंस ये आपका टरबाइन के लिए भी था, टरबाइन के लिए भी है, और कंप्रेसर के लिए। कंप्रेसर और टरबाइन का फॉर्मूला हम यूज कर लेते हैं डायरेक्टली, उस दोनों के लिए एजम्पशन इक्वली वैलिड। अब अगर आपको ये गिवन है, C1 C2 गिवन है, Z1 Z2 गिवन है, हीट ट्रांसफर गिवन है, तो आप सिंपली जनरल फार्मूले के लिए जाएंगे, जो आपका स्टीडी फ्लो का जो जनरल फार्मूला है, आप उसके लिए जाएंगे एंड देन यू विल सॉल्व, ओके। लेकिन ये फार्मूला यूज करने के लिए टरबाइन वर्क का और कंप्रेसर वर्क का कंडीशन ये है कि द कंप्रेसर शुड बी परफेक्टली इंसुलेटेड, कंप्रेसर या टरबाइन जो भी है, Z1 Z2 सेम, C1 C2 सेम, वेलोसिटी एट इनलेट एंड आउटलेट शुड बी सेम। कहने का मतलब है काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी चेंजेस आर नेग्लिजिबल, ठीक। अगर ये सब नहीं है, टरबाइन तो ऐसी ही बनेगी जहां पे इंसुलेटेड ना हो टरबाइन, ओके, काइनेटिक पोटेंशियल एनर्जी चेंजेस नेग्लिजिबल ना हो, राइट। तो उस केस में आपको जो जो भी कंडीशन गिवन है सब कुछ आप रखेंगे इन योर स्टेडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन फॉर्मूला, और वही हमने यहाँ पे किया है। इस फॉर्मूले में ये कंप्रेसर भले था, लेकिन इस कंप्रेसर में दिस कंप्रेसर वाज कंप्रेसर गिवन इन दिस प्रॉब्लम, लेकिन इस कंप्रेसर में आपका वेलोसिटीज गिवन थी 6 एंड 2, C1 एंड C2 गिवन था, Z1 Z2 सेम था, हीट ट्रांसफर। तो हमने जनरल फार्मूला यूज किया, दिस जनरल फार्मूला, और जो भी कंडीशन उसमें गिवन थी उस कंडीशन को इसमें पुट करना, एंड सिंपली वी फाउंड द वर्क ट्रांसफर। अगर सिंपल हमने H1 माइनस H2 माइनस H1 यूज कर लिया होता तो आंसर हमारा थोड़ा सा वेरी। चलो करके देख लेते हैं एक बार कि अगर हमने सिंपल अपना फॉर्मूला यूज कर लिया होता कंप्रेसर का H2 माइनस H1, पॉजिटिव आता, जाहिर सी बात है, कितना आता है ये 450 माइनस 290, दैट इज 160, राइट। इस तरह से अगर आप कर लेते तो आंसर आपका आता 160, हमारा ऐसे कितना है 159.98, ऑलमोस्ट 160, तो आंसर सेम होता। होता क्या है कि ये जो वेलोसिटीज है at the compressor inlet and at the compressor outlet, right, the change in kinetic energy है वो negligible होगी, right, that is something around 32 divided by 2000, right, that is 0.046, ये जो आया है that is 0.016, इतने का डिफरेंस आया। अगर इसको आप ऐड करते तो 159.984 लिख दिया आपने, और दिस इज 160, और 160 में let me multiply by 160 into 0.7, and that will come exactly 112, and this is answer given here 11। इसलिए जनरली होता क्या है कि जो टरबाइन्स होती हैं, जो आपके कंप्रेसर्स होते हैं, उसमें जो वेलोसिटीज होती हैं एट द इनलेट एंड एट द आउटलेट, वो वेलोसिटीज आपकी सेम होती है, वो वेलोसिटी ज़्यादा वैरी नहीं करती। काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी के जो चेंजेस होते हैं दैट इज ऑलमोस्ट negligible in the case of turbine and in the case of compression. That's why we do like that, right? That's why we neglect the kinetic and potential energy change. यहाँ पर भी हम कर देते तो आंसर सही आता, लेकिन we go by the method, अगर हमें गिवन था तो हमें इसको यूज करना है, राइट। तो अगर ये सब्जेक्टिव क्वेश्चन होगा तब तो आपको यूज करके दिखाना पड़ेगा, अदरवाइज आपका क्वेश्चन गलत माना जाए। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होता आप ना लेते, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है नहीं लेंगे तब भी आपका आंसर सेम ही आएगा। यहाँ पे भी पावर आएगा 0.7 into 160 एंड दैट इज 112, ऐसे भी यूज कर सकते हैं फॉर ऑब्जेक्ट। लेकिन आप ये मेथड प्रेफर नहीं करेंगे, ये मेथड प्रेफर नहीं करेंगे अगर आपको C1 C2 गिवन, अगर C1 C2 गिवन है यू विल नॉट यूज दिस मेथड। लेकिन आप देख सकते हैं आंसर आपका ऑलमोस्ट सेम आएगा, आंसर आपका ऑलमोस्ट सेम आएगा। क्यों आया? इसी वजह से हम कंप्रेसर और टरबाइन में अपना जो वेलोसिटीज है C1 C2 एट द इनलेट एंड आउटलेट भी नेग्लेक्ट है। देख सकते हैं दोनों दोनों तरीके से जो हमने आंसर कैलकुलेट किया है, आंसर एग्जैक्टली। ये जो कंप्रेसर का फॉर्मूला था H2 माइनस H1, इसके पीछे जो सारे एजम्पशंस थे ये आपको याद रखना, दिस एजम्पशंस यू शुड ऑलवेज
तो आई होप यू गॉट द पॉइंट। मैं आपको क्या बताना चाह रहा था जब आप रिवाइज कर रहे थे। नेक्स्ट वन। An insulated tank initially contains 0.25 kg of gas with an internal energy of 200 kilojoule per kg, additional gas with an internal energy of 300 kilojoule per kg, and enthalpy of 400 kilojoule per kg enters the tank until the total mass of the gas contained is uh, 1 kg. The final internal energy of the gas is mixture of gas. This is simply mixture of. This is simple the problem of mixture of gas. नेक्स्ट लेक्चर से जो हमें स्टार्ट करना है दैट इज सेकंड ऑफ थर्मोडायनामिक्स, इसलिए जो भी आपका छोटे छोटे टॉपिक्स थे एनएसटीडी के भी, मिक्सचर ऑफ गैसेस के भी, वो सारे हमने यहाँ पे इंक्लूड कर लिए हैं फॉर द रिवीजन। यू सिंपली टेल मी द आंसर, व्हाट विल बी द आंसर फॉर। ओके, यू हैव द ऑप्शंस। इंटरनल एनर्जी ऑफ द मिक्सचर, एनर्जी ऑफ द मिक्सचर, that will be U equals to x1 u1 plus x2 u2. x1 x2 is fractions, and that is m1 by capital M plus m2 by capital M. Here u1, here what is m is total mass, m1 plus m2, and that is 1. m1 plus m2 is 1. m1 is 0.25 और m2 जो बाद में ऐड किया गया, तो पहले 0.25 kg मास था, बाद में 1 kg हो गया, दैट मीन्स आपने 0.75 kg ऐड किया था उसमें, 0.75 kg इसमें आपने ऐड कर लिया। तो व्हाट इज u1, सॉरी um is 0.25 by 1 into u1, इंटरनल एनर्जी कितनी थी पहले 200 किलो जूल पर kg, 200 किलो जूल पर kg प्लस 0.75 divided by 1 into what is u2, gas with internal energy of 300 kilojoule per kg. This is 300. Okay, let me multiply this 0.25 into 200 plus 0.75 into 275 plus 50. That is 275. Answer is 275 kilojoule. This is the answer, 275 kilojoule per kg. मैंने आपको बताया था मिक्सचर ऑफ गैसेस के लिए सिंपली आपको फॉर्मूले सारे याद होने चाहिए, एंड यू विल गेट योर आंसर, यू विल गेट योर आंसर अगर आपके सारे फॉर्मूले आपको। ओके, लेट मी क्विकली गिव यू द रिवीजन फॉर दैट आल्सो, जो आपका फॉर्मूला था उसके लिए मैं आपको क्विक रिवीजन दे देता हूँ। मिक्सचर ऑफ gases, mixture of gases, right, is right on the formula for mixture for, जो फॉर्मूला है कुछ फॉर्मूले जो आपको याद रखने थे, दैट इज P1 पार्शियल प्रेशर is x1p and P2 is x2. x1 and x2 are mole fraction, mole fraction. Second one is
अगर आपको इक्विवेलेंट गैस कांस्टेंट चाहिए, आर ई इक्विवेलेंट गैस कांस्टेंट, एंड दैट इज m1 by capital M R1 plus m2 by capital M uh, R2, something like that. Third is equivalent specific heat चाहिए, and that is also m1 by capital M CP1, m1 sorry m2 by capital M CP2, and so on. And third one is where capital M is total mass, right? Total, right? That is m1 plus 2 plus m1 plus m2 plus, यहाँ पे हमने ठीक, इस तरह से हमने पढ़ लिया था फॉर्मूला, वहाँ पे आप इसको फाइंड कर लेंगे m1 plus m2 plus, right? This is something like, आपको फॉर्मूला अगर याद है तो आप इसको मिक्सचर ऑफ गैसेस क्वेश्चन इजीली सॉल्व कर सकते हैं। मूविंग टू द मूविंग टू द you quickly solve this. Adiabatic turbine, right? Again, once again you can see this is turbine, right? लेकिन यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी चेंज भी गिवन है, काइनेटिक एनर्जी चेंज भी गिवन है, ओके? तो आपको सब कुछ कंसीडर करना पड़ेगा। आप सिंपल टरबाइन वर्क के लिए, आप सिंपल टरबाइन वर्क के लिए जो हमने लिखा था H2 minus H1, you cannot use this formula, right? Because here kinetic energy is also given, potential energy also given, okay? लेकिन टरबाइन आइडियाबैटिक है, टरबाइन आइडियाबैटिक है, दैट मीन्स Q is zero. उस टरबाइन से हीट ट्रांसफर जीरो नहीं, एटलीस्ट वन कंडीशन इज सेटिस्फाइड, राइट? एटलीस्ट वन कंडीशन इज सेटिस्फाइड है, एटलीस्ट वन कंडीशन इज सेटिस्फाइड. So let's use that steady flow adiabatic turbine changes in that steady flow है. Let us apply steady flow energy equation. Let us use steady flow energy. इस इक्वेशन को हम यूज करके देखते हैं. H1 plus L square minus plus GZ1 plus Q, that is H2
तो जनरल इक्वेशन है उसको आप लिख लेंगे CT² by 2 प्लस GZ2 प्लस वर्क, राइट। ओके, तो हमें जो फाइंड करना है दैट व्हाट विल बी द वर्क डन इन दिस, क्या क्या गिवन, क्या क्या है, व्हाट इज गिवन है, changes in internal energy, that is U2 minus U1. U2 minus U1 is 100, sorry, 100 kilojoule per kg. Enthalpy, H2 minus H1 is given as minus 140 kilojoule per kg. In kinetic energy changes, right? C1 square by 2 minus C2 square by 2 is given as minus 10 kilojoule per kg. Changes in kinetic energy and potential energy G Z1 minus Z2 and that. ये जीरो गिवन, एवरीथिंग एल्स इज गिवन हियर। व्हाट इज वर्क डन, आपको यहाँ पे Z1 इक्वल्स टू Z2 है, ये तो जीरो गिवन है, हीट ट्रांसफर हियर, हीट ट्रांसफर हियर इज व्हाट विल बी वर्क डन, so here H1 minus H2 is C2 square, no? Changes means C2 square minus C1 Z2 minus H1 minus H2 plus C1 square by C2 square 1000 by 2000, ये तो आपका जीरो है, प्लस what is H1 minus H2, what is H1 minus H2, that is 140, H2 minus H1 1 minus 140 है, H1 minus H2 140 plus C1 minus C2 is minus 10, that is 10 here, that will be 150 kilojoule per, जो गिवन था वो फाइनल माइनस इनिशियल था, H2 minus H1, जो हमें यूज करना है वो H1 minus H2, that is that's why it will become positive, right? तो आंसर होगा that will be 150, आंसर will be 150, आंसर will be 150, that the answer will be आई होप यू गॉट द पॉइंट। यहाँ पे भी आपका टरबाइन था, लेकिन यहाँ पे सब कुछ गिवन है, राइट? सब कुछ अगर गिवन है तो उसको आप यूज करें, जो आप जनरल इक्वेशन है, कुछ नहीं करना है, आपके पास एक जनरल इक्वेशन है, जनरल स्टेडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन, यू शुड रिमेंबर दिस इक्वेशन एंड जो जो कंडीशन कहा गया है अगर रिलेटेड है हीट ट्रांसफर की, अगर काइनेटिक पोटेंशियल को नेग्लेक्ट करना है C1 इक्वल टू C2 Z1 इक्वल टू Z2 नहीं करना है तो भी आपको कंडीशन में गिवन होगा, यू शुड यूज दैट, ओके। सो दैट्स हाउ यू विल फाइंड योर, आप सिंपली अगर यहाँ पे भी अगर H1 माइनस H2 लिख देते तो आपका जो आंसर होता दैट वुड हैव बीन रॉन्ग, ओके। तब जो आपका जो आंसर आता वो गलत, आपको उसको यूज है। आई होप यू गॉट द पॉइंट। नेक्स्ट, steam enters an adiabatic turbine operating at a steady state with an enthalpy of 3251 kilojoule per kg. That that means H1 is given, kilojoule per, and leaves as a saturated mixture of at 15 kilopascal with quality 0.9, that means dryness fraction point. This is our quality of steam is dryness fraction. This is given as dryness.
Reynolds factor is given as the enthalpies of saturated liquid and vapor HF given है 225.94 किलोजूल पर kg and Hg given है 2598.3 kilojoule per kg. The mass flow rate is also given as 10 kg. Kinetic and potential changes are negligible. Right? ये जो टरबाइन है ये एडियाबैटिक भी है, दैट मीन्स Q इज जीरो, और काइनेटिक पोटेंशियल एनर्जी चेंजेस इनको आपको नेग्लेक्ट भी करना है. ओके, तो यहाँ पे वो सारे एजम्पशंस फुलफिल हो रहे हैं, यहाँ पे वो सारे एजम्पशंस फुलफिल हो रहे हैं जो हमने लिए, जो हमने अपने इक्वेशन के डेरिवेशन में जितने भी एजम्पशंस हमने लिए थे सारे एजम्पशंस फुलफिल हो रहे हैं. यू सिंपली हैव टू सॉल्व दिस क्वेश्चन. ओके, simply have to solve this question. Find out. Like you have 1 minute to solve this question. Simply heat transfer is zero. Simply इस क्वेश्चन heat transfer zero है. Kinetic potential energy changes को neglect करना है. E1 equals to almost equal. ये है आपका जो टरबाइन वर्क हो जाएगा इसके सिंपली भी H1 माइनस H2. टरबाइन वर्क तो सिंपली H1 माइनस H2 हो जाएगा. We have to find power. Power is mass flow rate H1 minus H2. H1 given है, H2 हमें चाहिए. What is H2? H2 is given as HF. H2 is given as HF plus X Hg minus, and that is at 15 kilopascal. This place. What is HF? HF is given as 225.94. 225.94 plus X. X is 0.9. 0.9. What is Hg? 2598.3. 2598.3 Hg minus HF 22. That is minus 25.4. ये सारी चीजें हैं, इसको हम सॉल्व कर लेंगे एंड विल फाइंड H2. 0.9 plus 2361. Now this is 2361.06. H2 is 2361.064 kilojoule per. This is your answer. Okay, H1 मिल गया. Now what is power? Power is mass flow rate 10. H1 is given 3251. 3251 minus H2 is 2361.26. Right, 8899.36, that is kilowatt, and we have to find an answer in megawatt, that is 8899.36. 8899.36. This is in kilowatt. We have to find answer in megawatt. 8.9, 899, that is 8.9, that is in 8.9. The answer is 8.9.
Okay, so here is the answer 8.9 mega. सिंपली आपको ये कंडीशन गिवन थी, ये कंडीशन गिवन थी, saturated vapor saturated mixture at 15 kilopascal, ड्राइनेस फ्रैक्शन था उसका। उस ड्राइनेस फ्रैक्शन को आप प्रॉपर्टीज ऑफ प्योर सब्सटेंस में आपने फॉर्मूले पढ़े थे, उससे आपने यूज करके पावर यहाँ से फाइंड कर लिया। दिस इज द H1H2 मिलकर सारी कंडीशंस फुलफिल थी, तो आपने फ्रॉम स्टेडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन से ये फॉर्मूला आपको पहले ही पता था, आपने इसको यूज कर लिया एंड यू फाउंड द आंसर। ओके, तो ऑलराइट, आई होप दिस इज ऑल फॉर दिस टॉपिक। From tomorrow onwards we will start second law of thermodynamics. इसके अलावा I am going to start, if you want to watch live thermodynamics on Unacademy app, right? Unacademy app, उसमें मैं लाइव थर्मोडायनेमिक्स स्टार्ट करने वाला हूँ फ्रॉम टुमारो। यू कैन वॉच, यू कैन ज्वाइन मी देयर एंड वॉच दिस lectures, right? Join me there at up at Unacademy. At Unacademy, you can search me by the name Ravi Prakash. You can follow me on the Unacademy. You can follow me at Unacademy. You can follow me at the Unacademy. You will get the notification whenever the class is scheduled. Right? लेकिन Unacademy ऐप पे मैं आपका full lecture on, this is full, right? Full course on thermodynamics I will be started. You can join me there. Okay. So okay, I hope you got the point. Thanks for the joining in. Subscribe to this channel and also get your plus subscription on Unacademy. Use this code RAVIPY to get 10% discount in your total subscription fees. Alright. Thank you very much. Thanks for the joining.